So up till now we have basically discussed what work actually is. यानी work होता क्या है? Now we know that. Next we move towards an important concept जिसे हम कहते हैं force displacement graph. So जैसा कि हम अभी तक सब ग्राफ्स को जो डिफाइन कर चुके हैं, a graph is always a plot showing the relationship between two different physical quantities. In this case these are force and displacement. तो जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन शो करने के लिए जो हम प्लॉट ड्रॉ करते हैं उसे हम कहते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इसमें हम फोर्स को ऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस पे लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम एब्सिसा यानी एक्स एक्सिस पे लेते हैं, एंड द एरिया अंडर द ग्राफ इट इज इक्वल टू द वर्क डन। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि द फोर्स इज टेकन ऑन वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, दिस इज द ग्राफ प्लॉटेड and the area under the graph which is shown by this highlighted area, it is the work done. So moving on forwards, हमारे पास एक problem है, the area under the force displacement curve represents work, displacement, force या फिर acceleration. The correct option is option A, work. Now solution to this problem is very simple. हम कहते हैं कि एरिया अंडर एनी कर्व इज एब्सिसा मल्टीप्लाइड बाय द ऑर्डिनेट, यानी सिंपली जो हमने एक्स और वाई एक्सिस पे वैल्यूज ली हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन दिस केस एक्स एक्सिस की वैल्यू को हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे थे, वाई पे हमने फोर्स ली थी, इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि एफ डी है दैट इज इक्वल टू वर्क। सो एरिया इज द वर्क। हमारे पास अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, द एडजेसेंट कर्व फाइंड द वर्क डन। These are the four options and here you can see the curve. इस केस में हम कह रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हमने एक प्लॉट शो किया है, तो हम कहते हैं कि वर्क डन फॉलो करना है, हमने फाइंड करना है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 2500 जूल्स। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कर्व हमें गिवन है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, इनकी हमने प्लॉटिंग की है। तो शेप हमें जो मिल रही दैट इज अ ट्रेपेजॉइड शेप, यानी एक रेक्टेंगल प्लस अ ट्राइंगल, इट इज कॉल्ड ट्रेपेजॉइड शेप। सो इसका एरिया जो हम कहते हैं कि दैट इज इक्वल टू वर्क, हम सिंपली वो फाइंड करेंगे, वर्क की वैल्यू आ जाएगी। सो द एरिया इज कैलकुलेटेड एज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। यहाँ पे दो पैरेलल साइड्स हैं, दिस वन एंड दिस वन। दिस इज 30 units long, this is 20 units long, and the height is the vertical distance from between the two parallel sides, it is 100. So half 30 plus 20 to 100 equals to 2500 joules. This is simply the work done. In the next slide, we'll discuss the different types of work. Thank you.